Grammalogues phonetically. Grammalogues phonetically means in this series of grammalogues, in this class of grammalogues, we will do the grammalogue according to the sound. As we done in the our previous classes of grammalogues alphabetically, हमने अपने पिछले कुछ क्लासेस में हमने A to Z तक grammalogues alphabetically किए थे. Similarly, इस grammalogues की सीरीज में हम grammalogues phonetically करेंगे, मीन्स उसके साउंड के अकॉर्डिंग. ओके, सो फर्स्ट जो हमारा grammalogue है वो है पुट. यहाँ आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी here I mention the numbers. ठीक है, 3 means it comes in the position of third. Okay, and here is 1. 1 means position 1. Okay, so let's start making the outlines or grammalogues. First is put. So put comes in the third place. Put. Next, special or specially, ठीक है, और speak. तो आउटलाइन क्या है, सेम है. SP हम बनाते हैं, ठीक है, बट जब हम स्पेशल और स्पेशली के लिए यूज़ करते हैं तो हम सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं, एंड जब हम स्पीक लिखते हैं तो हम उसको थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स कट दी लाइन. आउटलाइन सेम है बट डिफरेंस क्या है, पोजीशन का. ठीक है, स्पेशल और स्पेशली ऑन द लाइन एंड स्पीक कम्स ऑन द कम्स कट द लाइन और थ्रू द लाइन. ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल और principally. Sorry, principally. So for all 3 words we use the grammalogue in third position. So principal, principally. Next, people, cut the line. Okay, third, here I mentioned the third 3, so it means it comes on the third position. Okay, this is the third place. Surprise, surprise on above the line. Surprised, SPSD, surprised above the line. Next, particular or opportunity. So for particular, outline will be same, PR in half length but above the line. Second is opportunity, outline will be same but it comes on the line or in the second place. Next, spirit, second place is spirit in half length. Next, B, this is B, ठीक है, second place, and 2B, so it comes in third place through the line. Okay, next is subject or subjected. So for subject and subjected, S and P on the line. Next, subjective, S, B and V. Subjective. Subjection, S, B and shun.
subjection. ठीक है, सेकेंड प्लेस. नेक्स्ट इज लिबर्टी, मेंबर, रिमेंबर और रिमेंबर्ड. सो फॉर लिबर्टी वी अर्नड इज नंबर्ड. ठीक है, सो इन सबका एक ही आउटलाइन बनता है, मीन्स एक आउटलाइंस में सिमिलर आउटलाइंस, बट इसका पोजीशन और प्लेस चेंज होता है. लिबर्टी का रिमेंबर, रिमेंबर्ड और नंबर्ड. तो फॉर लिबर्टी के लिए हम बनाएंगे LBR लिबर्टी. ठीक है, नेक्स्ट मेंबर, रिमेंबर्ड और रिमेंबर्ड. ठीक है, सो ये हो गया हमारा ऑन द लाइन, सेकेंड प्लेस. नेक्स्ट नंबर्ड, आउटलाइन सेम होगा बट पोजीशन चेंज. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन और प्लेसेस. क्लियर. नेक्स्ट इज बिलीव और बिलीव्ड. बिलीव और बिलीव्ड थर्ड प्लेस पे आएंगे हमारा ग्रामरलॉग. ठीक है, नेक्स्ट इज बिहाफ, BNF. सॉरी, बिहाफ फर्स्ट प्लेस पे है, सो इट कम्स above the line. BNF का hook, behalf. Next is been. It comes on the second place. Been. Balance, BLNS, balance. Okay, next is building. In building second place, so but in half length. Okay, for build or building, BL, building. Next is it. Itself, third place, so it self. Truth, TR, truth, second place. Next, tried, to what, trade. Outline will be same, but only difference, or what is the difference is the places or positions. So tried comes on the first place in half length, and to what or trade comes on the second place. ठीक है, next is towards, so TR in half length and S, towards. Next is tell and till. Tell, TL, tell and till, cut the line, till. Told, half length of TL. Circumstances, S, circumstances. Satisfaction, STS and shun, satisfaction. Instructive, T and V, instructive. Instruction, ठीक है,
ये सारी लाइंस हमारी, ये सारे ग्रामलॉग्स हमारे अभी सेकेंड प्लेस के हैं. नेक्स्ट, हैड, डू, डिफरेंट और डिफरेंस. सो हैड comes in first place, do comes in second place, okay, and different and difference comes in on the third place, okay. ये हुआ डी, had, then do और different and difference. Next, doctor, dear, during. So doctor, dear, doctor, then dear and during. ठीक है, outline same but the position is different. Next, deliver, delivered, delivery. It comes in second place. Next, deliverance, deliverance, second place. Advantage or difficult. Advantage comes in first place, advantage, and difficult comes third place, okay. So here are the few grammalogues according to the sound, or you can say according to the phonetically, okay. Rest of the grammalogues we will do in our next class.